Hi guys, this is Amaal Mallik and you are watching me on Bollywood Hungama. Hi guys, my name is Urmin, आपकी RJ Urmin and welcome to Bollywood Hungama. Oh my god, I have to constantly think about an introduction for this man क्योंकि every time he amazes me, he surprises me. मुझे लगता है कि आज के ज़माने में where we are almost confused कि कौन सा गाना हमें पसंद है, क्यों पसंद है, क्योंकि रील्स उसके ज़्यादा आ रहे हैं या वाकई में वो गाना अच्छा है या फिर वो मेलोडी जो है वो बार बार हम सुन रहे हैं. Such a confusing state. I'm so glad that एक ऐसे composer है who is acing melody, who is concentrating on the lyrics, on the singer and his amazing work. I'm so glad to have known him personally and have to love his music on my playlist is a whole new high. Please welcome Amaal Mallik. I cannot say anything more than this, but I have to tell everyone कि मुझे यानी ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ यानी लोग मुझे यही पूछते हैं कि ये गाने के टाइम अब आरजे उर्मिन वाला इंटरव्यू करोगे ना. मतलब अभी वो आरजे उर्मिन नहीं, अभी वो उर्मिन है. मतलब हाँ, तो पहले मैं पॉजेसिव हो जाता कि ऐसे नहीं बुखारो ने वो उर्मिन है. बट एवरीवेयर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी इंटरव्यूज हुए वो शायद मैंने कभी कभी पॉलिटिकली करेक्ट या इनकरेक्ट बातें की है पर दिल से बातें की है. दे हैव ऑलवेज कम आउट वेल एंड इन टोटल ऑनेस्टी बिकॉज ऑफ द वे शी इंटरैक्ट्स. एंड वो इंटरव्यू नहीं होता है, ये भी इंटरव्यू नहीं है. आप सिर्फ देख रहे दो दोस्त मिल रहे हैं और ये खुश हो जाते कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो शी इज लाइक चल तेरा इंटरव्यू कर ही लेते हैं. नहीं, आई एग्री. आई एम रियली हैप्पी कि दैट हमारी बातें जो है वो एक इंटरव्यू फॉर्मेट में निकल आती है बिकॉज दे आर कॉन्वर्सेशंस अबाउट म्यूजिक. एंड इस इंटरव्यू से पहले भी अमाल कीप्स sharing his new songs, I bother her a lot. ideas. मैं रात को 11 बजे भी फोन कर लेता हूँ, बोलता हेलो अच्छा एक प्रॉब्लम है. बट आज स्पेसिफिकली हम एक बहुत ही स्पेशल गाने के लिए मिल रहे हैं एंड दिस सॉन्ग इज ब्यूटिफुल बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड आई एम ग्लैड कि इस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के जरिए आपने ये बता दिया कि इवन दो देयर इज हिंदी म्यूजिक and an international artist on it, you can churn him to your ways, Amaal. Yes, I miss you, Amore. Guys, I'm sure आपने ये गाना सुना है. अगर नहीं सुना है तो फटाफट सुन लीजिए because this song has got magic. Tell us something about it. I think it's like it's safe to say now after 8-9 years कि it's an Amaal Mallik love song. Yes. But it has a very beautiful English verse also. And usme we were really happy, like as a team, me, Sukriti, Prakriti and Kunal have done the Dua Lipa collaboration. So that was the first in India. Like obviously globally us level pe se Rahman sir had taken India and its music, and then I got the opportunity to do that song. Uske baad this is something that came through from Universal Music India. Devraj Sanyal and Sajid Maklai, उन लोग ने मुझे phone किया and said there is Matteo Bocelli, who is an Italian artist, the son of Andrea Bocelli, legendary, orchestral singer, opera singer, और उनके son और सरदार मलिक के grandson, they want to mix the cultures of India and Italy. And he said it would be amazing if we could bring a legacy of music together and bring the right voices from our country, our label. And both the girls are the artists of Universal India. So I was like, कुणाल और मैंने उधर डांस ट्रैक किया था. I was like, मेन स्पेस तो हम लोग का ऑब्वियसली चले आना एंड घर से निकलते काइंड ऑफ म्यूजिक है. I was like, it's a no brainer, कुणाल होना ही है इसमें. With the girls, but this was the first time because the music that they also have done on their own independent space in their singles is very dance pop. और मैंने भी उनके साथ done कर गई चुल with Sukriti and सुबह सुबह with Prakriti. Both are dance hits. So this is territory which I've usually done with maybe you can say Palak Muchal, or my collaborator on many songs, like Kaun Tujhe. So it's an emotional song. So you don't expect even them suddenly to switch gears, but they have also done it so beautifully. Video में भी उन लोग ने बहुत अच्छा काम किया. So Matteo for me, मुझे लगा कि I'm working with Armaan because he's 25, he's younger to me almost by 6-7 years, but he's 6'4" tall. So it was working with the same like younger brother feeling. और सबसे अच्छी बात ये थी कि when both the labels, Capitol Records Italy and Universal India, decided to कि ये करना चाहिए हमें, तो
मुझे अब लगा था कि ना कैसे होगा, पहले यही था कि अभी इटालियन वर्ड भी चाहिए, सम वर्ड्स हियर एंड देयर, इंग्लिश का एक पूरा वर्स चाहिए, बट वो हिंदी के साथ जेल होना चाहिए. सो आई वाज लाइक मे बी इज लुकिंग फॉर अ पॉप सॉन्ग, क्योंकि मैं भी दैट it's a shadow to break from. How he has to break from Andre Bocelli, I had to do it for my family. So मैं सोच रहा था he will want to jump some new space. तो मैंने एक R&B pop ऐसा dance song बना के I sent him, and he was the one to say no, I want something Indian at heart. So and I was like, are you sure? Like, what have you heard? I asked him. I said, what is Indian according to you? And he played me Gerua. He said this. I've heard this is obviously Shah Rukh Khan, biggest song of Indian music in the last many years. So he said this soundscape, ये जो है ना, I want to have that also, but be able to sing. So it was his idea also. So I was very happy to see कि somewhat दो musicians ऐसे मिल रहे हैं जिन दोनों की legacy है, दोनों अपने legacy को break away करके कुछ बनना चाहते हैं. But वो कहते हैं ना कि how far will the fruit fall from the tree? We both decided that we want to do emotional music only. We were like very, very sweet boys coming together and like, forget dance music. Let's do something real. And that's how it happened. He said, Ki, you write your Hindi verse, I'll write something in English. We'll try to bridge it. So he worked on the lyrics, but he kept on going back and forth. Because I told him that, English is growing as a market. Armaan is doing it and all. But यहाँ पे English की understanding of very extra Englishy words is not there. Simple English लोग समझ सकते हैं कि I close my eyes when I see you. In my dreams, in my heart too. Every time it's the same and you tell me, I miss you amore. अब वहाँ Italian आती है. I said, पर इतनी English हमारी young kids also who go to maybe Hindi medium schools, they are well versed with this much English. I said I wanted to be not pan India. You don't want it to be just Italy and English. Right. I said we have to find the whole country and the whole world also in this. I said I'm not leaving it like this. It's my third time I'm doing an English song. I did Dua Lipa, then Armaan ke साथ Sun Mahi English version. I said both have proven that language अब फर्क नहीं पड़ रहा है. But मैं चाहता हूँ कि इंडिया में where it's an inroads for an artist like him, अच्छा melodious composer singer वो भी है. So if you want to make a space in Indian people's playlists and their hearts, you should have simplicity, whether it's in writing or melody. तो मैंने वो tune बनाई. I was in Lonavala when I remember Zoom call पे in the lockdown 3 years ago this happened. And they were all on a video call and मैं अपनी गाड़ी से I had connected the battery and everything. I just without an instrument I sang मुझ में यादें हैं तेरी दिन भी शामें हैं तेरी तुझसे बातें ना हो मेरी फिर भी बातें हैं तेरी. ये लाइंस दिए थे कुणाल ने. I was like ये तो चेंज नहीं होगा and ये ट्यून मैं सुना देता हूँ. And they were all like pura Universal, pura label from Italy, everyone, Matteo's management, everyone, just 18 people on that call. And I said, guys, you've got to be on a holiday, but मेरे पास tune ready, आप सुन लो. And he reacted, he understood. A good musician understands without instruments also. And he, I would say, with respect, a naked melody. Without any arrangements, he understood the value of the song and he said, I want to do this song. But how did you manage to get him to do these perfect harkate? मतलब when you're listening to his voice, you're like, wow, मतलब एक सेकंड के लिए आप यकीन नहीं मानोगे कि यार ये इटालियन आर्टिस्ट है. How did you manage to do that, Amaal? So best thing was that when I heard his voice, मेरे उसने जो वर्स गा के भेजा first time, तो मैं बहुत खुश था to know कि आजकल सब लोग पॉपिश सिंगिंग एंड फॉल्सेटो सिंगिंग ऑब्वियसली व्हिच इज वेरी अमेजिंग, बट बहुत टाइम से एक ऐसी लो बैरिटोन ब्यूटीफुल वॉइस आई नहीं है. एंड आई हैव लव्ड द म्यूजिक. एल्विस प्रेस्ली एंड इंगिलबर्ट, दे ऑल सिंग लाइक आर यू लोनसम टुनाइट, ऐसी वॉइस. माइकल बुब्ले ऑल्सो. पर ऐसे लोगों की वॉइसेस आजकल पॉप सीन में नहीं सुनाई देती है. When he sang, my hair is in pieces, I was like, wow, कितना अलग timbre है ये. His voice feels like a warm hug. Right. तो मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, I said, you're understanding my emotion so well. You're understanding even what you've written, you're putting. यानी वो दोनों हिंदी इंग्लिश के लिरिक्स कोई कम भारी या ज़्यादा लाइट नहीं है. Both have equal weightage in terms of feeling. Like you'll feel very bad when you listen to the English lyrics also, and you'll feel extremely broken when you hear the Hindi also. But कहीं ना कहीं towards the end we wanted to bring a smile कि I miss you but it's not meant to be. तो उसने
ये सब समझा मैंने हर बार. I've sent him voice notes. He sent me the first draft. So I said, वो जो part है जो I'm trying to move on, but each step that I take feels like the wrong one. The wrong. थोड़ा सा that is a murki. Sometimes this was his idea. Sometimes you give. That this was his idea to keep it. He only said, no, what they have done in Indian, I'll try. He started enjoying the murkis. मुझे लगा कि उसको अपने singing और दिखाने का मौका भी मिला. But he didn't do it like a gamak and an Indian classical singer. वो जितनी उनकी understanding थी of what I was singing, he did it balancing Western Indian. वो जो but mostly where I was stunned कि वो Indian करेंगे वहाँ कि नहीं, यार कर सकता है कि नहीं, was I miss you when the sun comes up and underneath the stars. I'm like, ये तो. I said, do you really want to do that? Like, I was feeling like, I don't know. I said, do you want to do I miss you when the sun comes up and underneath the stars? Maybe. Right. That was expected. But he just but I was liking it, पहले मेरे को लगा cheesy तो नहीं हो रहा है. Am I pushing him too much? But then I played to my dad, my mom. मम्मी से तो गाना पसंद करवाना बहुत मुश्किल होता है. She really liked it in one go. So I believe girls like a heartbreak song, then the song is safe. It happened. I think he just listened to me. Oh, what a track. I have put it in my playlist, and even I'm very difficult when it comes to putting songs in my playlist, but this definitely goes. It's just beautiful. Say that again. I am putting it in my I'm very difficult. I never said I'm very difficult. I'm difficult. It's very difficult for me to put background music. I'm not difficult. It's very difficult. So, Sune, how about we listen to it? आँखें जो नम है, अश्क वो हम है, प्यार है या फिर किस्सा खत्म है, कह दो भले तुम हमको पराया, तेरे रहेंगे तेरी कसम है, जो मेरा नहीं है उसे कैसे रोके, नहीं जानता वो कहे भी तो कैसे, मुझ में यादें है तेरी, दिन भी शामें है तेरी, तुझसे बातें ना हो मेरी फिर भी बातें है तेरी. I close my eyes and I see you in my dreams, in my heart too. Every time it's the same and you tell me I miss you, amore. And my body wants to know just why I let you go, but I keep on forgetting the reason why. होंगी राहें जुदा, ये सोचा नहीं था कि तेरे बिन अब कहाँ जाए. Gotta be honest with you now, that's all I think about. I'm missing you amore night and day. होंगी राहें जुदा, ये सोचा नहीं था दोबारा तेरे हम ना हो पाए. I messed up the lyrics, but sorry Kunal, you can write it again. But इसका एक unreleased part है जो मैं गा सकता हूँ. Hopefully. आपको अगर claim आएगा तो हम यूनिवर्सल इंडिया से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे. But there was an अंतरा जो मे बी हिंदी वर्जन अगर कभी आए तो this is what I thought. नहीं आए तो ये मेरा है. जुदा हुई है राहें अगर नहीं रहे हम तुम हम सफर, यूं ही गुजरते हुए कहीं मिल जाओ ना, मुझे मोहब्बत लाई किधर नहीं था ना आए जिधर, बिछड़ गए हैं मिले बिना समझाओ ना, कोई मांगता है तुम्हें रब से रोके, नहीं जी सकेंगे किसी के भी होके, मुझ में यादें हैं. So that was the part. पर आए ना आए, but I want to say a big thank you to कुणाल कि क्या extended verse था. यानी वो मुखड़ा ही लिखने में it took us
so many drafts. Not that we were not writing perfect, but we wanted something light and meaningful. The hook came कि मुझ में यादें हैं तेरी, दिन भी शामें हैं तेरी, तुझसे बातें तो नहीं होती है पर फिर भी बातें तेरी होती है. You know, this kind of thought. I was like, ये रहेगा, and we'll make this as an अंतरा. जो मैं यानी I made this after the mature version was done. And then I played it to them and they were like, okay, this is really nice and hopefully we'll do a version. उसमें ये बात जो थी कि जुदा हुई है राहें अगर नहीं रहे हम तो हम सफर, यूं ही गुजरते हुए कहीं मिल जाओ ना, मुझे मोहब्बत लाई किधर, नहीं था आना आए जिधर, बिछड़ गए क्यों मिले बिना समझाओ ना, कोई मांगता है तुम्हें रब से रोके, नहीं जी सकेंगे किसी के भी होके, मुझ में यादें हैं तेरी, अन्ना आगे बढ़ता है. तो maybe if the audience likes it, we will have a version like this. I hope they like it. This is why I love my interviews with this man. It's always something different, rare. And मैं add करना चाहूँगी that, you know, the reason why I have always called Kunal Dard Verma. Kunal Dard Verma. He's for like, sure. For sure, there is कुछ so much. तो 3-4 बुरे धोखे हुए उनके साथ जो इतना दर्द पाल के घूम रहा है इंसान. आखिरी पास्ता, are you listening to this? नहीं वो पास्ता पक चुका. आखिरी पास्ता इनकी बीवी का इंस्टा हैंडल है, in case you're wondering. उनका हैशटैग मैंने रखा है ब्लॉगर दीदी. क्योंकि वो हर एक वीडियो पे मुझे उनका लाइक और एक सार्कास्टिक कमेंट दिखता है. तो आई कॉल आखिरी पास्ता ऐसे मैं हैशटैग रख दिया आपका ब्लॉगर दीदी. कुणाल also rolling on the floor कि क्या हैशटैग है. But with Kunal and you, and Armaan, recently, just before I Miss You Amore, there was Sun Mahi. Yes. Oh my God, what a track again. एक तो मतलब कुछ गाने ऐसे होते हैं that you know have a surprise element, and surprise क्या है? उसकी simplicity. Would you agree? I think today it's important to surprise everyone with simplicity because it's not being given by musicians. Any very few songs today, I would say, like how I really like what this new artist King has done with Maan Meri Jaan. यानी तू आके देख ले वो भी यानी but उसमें pop approach है obviously because he's doing it without a film. With us, an expectation of cinematic also comes through कि ऐसा गाना larger than life होना होता है. But that's how यानी वो गाने के success में obviously well marketed, but you cannot market something which is not simple and pure to connect. उस गाने में बातें इतनी पर्सनल है कि तेरे दिल से ना खेलूंगा ऐसी बातें हैं. You know, तो सारे राज तेरे अपने तेरे को दे दूंगा. ये शायरी नहीं है like poetic way of saying, but this is how the common conversation of people happen. So people want easily written and easily sung songs. In recent times, I think that one song, and then there was a song of Darshan Rawal also which I'd liked, which was his last summer title भूल गया. असल में तुम नहीं हो मेरे. यानी असल में थोड़ा you know it's like a how do I say it? It's like in the most coolest way Bantai language. You know, you would say Mumbai language to say कि असल में आज का सीन कैन हो गया. You know ऐसी बात, but असल में तुम नहीं हो मेरे. That was nice. तो ऐसे गाने भी यानी me as a composer I listen to everything good and bad because वो ज़रूरी है. ऑडियंस का बेस्ट चीज आज ये है कि जो अच्छा उन तक पहुंच जाता है, जो खराब है वो भी उन तक पहुंचता है. दे आर मेकिंग अ चॉइस. सो टुडे सुन माही जैसा एक माउंटेड गाना इन टर्म्स ऑफ नॉट अ लैविश एक्सपेंसिव वीडियो बट लैविश इन टर्म्स ऑफ साउंड. यू कैन इफ यू वी हैव रिलीज्ड एन ईपी, एक इंस्ट्रूमेंटल वर्जन भी अरमान ने डाला है उसमें, सो दैट पीपल कैन हियर द environment that I have made. कल उनको we first time given it so that singers have a track to sing, guitarists have a lead, you know they do lead covers and all. तो उनको वो भी मिले और देखे कि हमने क्या किया है. Very few times a musician gives an insight कि मैं ये सब मेरा environment है पीछे. But we have done synth wave, a genre that's there with deep pop and everything. But गाना at the end of the day, वो कुछ भी sound हो, वो sound is 2023. 2022, 2023 के बच्चे जो सुन रहे हैं, बच्चे I mean Arman's main audience which is like 15 to 30. These kids are listening to this kind of music. जो places like Antisocial and all these places you go, you hear minimal tech, deep pop, ऐसे genres है जो सुन रहे, trap, chill trap, lo-fi.
But this song पहले हम लोग ने this was the first song we met after 6 months and made together and हम लोग लोनावला में थे and Armaan said एक सिंगल करते हैं ना मैंने बोला हाँ क्यों नहीं मैं तो कब से बोलते रहता हूँ कि करते हैं कुछ and he's like no my like not anywhere now on my label so MWM is my label Always Music Global is his with mom mine with dad so he said no first time I want to do a song on my label my brother I want to be able to remunerate you I said रहने दे नहीं चाहिए अच्छा गाना करते हैं पहले he's like no I want it for my like we are not giving anyone इतना possessive था he's like कुछ भी बनाएंगे it has to be ours I was like okay let's do and Sunmai happened and वो ट्यून जब बनी तभी इतना breathless approach था like how शंकर जी had done breathless मैं नहीं गा पाता वो जैसे मैंने कंपोज कर लिया गलती से तो अरमान only could sing because his breathing techniques and singing capabilities are beyond now like I'm seeing मैं खुद देख रहा हूँ like his maturity is every day he's acing it touch wood that is amazing and lyrics obviously कुणाल को जब मीटर दिया कुणाल ने भी बोला ये बाउंसर दिया आपने मुझे ये कैसा मीटर है because we wrote रफ मैं और अरमान मैं तो लिखते ही रहता हूँ कुछ ना कुछ लिरिकिस्ट हूँ मैं as I always said तो we did और पहले जब वो पार्ट आया हुक का which was तारा तो हम लोग गिन रहे थे कि इतने देर तक सांस रोकनी है हमें this is one note it's not happened in a long time कि अच्छा सही है इतनी देर तक एक ही नोट है पर बातें बदल रही है It's never happened. I don't know, like I don't want to boast out, but ख्वाबों के किनारे मैं भी आऊं तू भी यारे जी ले जिंदगी जरा सी थोड़े लम्हे गुजारे ना हो दुनिया की बातें पे ट्यून आई हम दो नहीं तो just sound simple but simple works आप गा रहे हो ना पसंद आ रहा है but the thoughts are changed कि ख्वाबों के किनारे मैं भी आऊं तू भी यारे चील जिंदगी जरा सी थोड़े लम्हे गुजारे ना हो दुनिया की बातें हम दोनों और ये तारे मैं ये मेरी लाइन थी कुणाल के साथ मैं लड़ लिया था इसके लिए रिटन बेटर बट आई सेड हम दोनों और ये तारे मेरे को ये बात बोलनी है ऐसे जस्ट आई सेड वी नीड दिस पीपल से ना मी यू अंडर द स्टार्स When will we write this? हम दोनों और ये तारे हाय So then he said ठीक है भाई आप रख लो पर लास्ट वाली लाइन मैं लिखना चाहता नहीं रोड मैंने ढूंढा है सारा जहां तेरे जैसा कोई कहा रे ना खत्म हो गया तारे आपको राइम मिल गया तारे भी मेरी खुशी कोई कहा रे ऑल्सो सी इट्स नॉट कोई कहा है बोलते आप बट इसमें भी एक वर्नाक्युलर अप्रोच है हिंदी को इतना कूल वीडियो बीच पॉप लुकिंग ग्रेट बट द साउंड एंड दैट इज इंडियन एट हार्ट क्या आप बोल रहे हो ख्वाबों के किनारे मैं भी आऊं तू भी आरे मिल क्वालिटी जैसा लग सकता था मैं इतने डाउट्स होते मुझे व्हेन आई हियर ऐसा कुणाल वो आरे मिल क्वालिटी की याद दिला रहा है भाई ऐसा कोई नहीं सोचता मतलब मैं सोच रहा हूँ चेंज कर नहीं so what happened when you heard आरे ये क्या हुआ now that's released and hit ना हम तो नया बना रहे हमको तो डाउट्स रहेंगे ही so I'm also adapting जी मैं I'm good at this कि मुझे कोई गाना अच्छा लगता है someone gives me a reference also I don't take it कि पर्सनली कि नहीं मेरा ये स्टाइल है और मैं इसके अलावा करूंगा नहीं मेरा तो स्टाइल आना ही है लाइक इवन व्हेन आई डिड अ फिल्म लाइक नूर लॉट ऑफ पीपल हियर दैट एंड से कि साउंड्स लाइक नॉट अमल मलिक काइंड ऑफ म्यूजिक वी फेल्ट दैट मे बी अमित त्रिवेदी's done it and कि I was like yeah because the brief was to make music like that some people say make la shankar aisa lo sometimes I am a reference but to each their own I love it when someone gives me not my song ka reference right so Armaan said I want something which is not you not me but us so I was like okay wait come after 2-3 days but I have a hook and this happened सुने है मौसमों की अदाओं में तू बहता है भीगी हवाओं में तू दिन भर चले हैं ख्यालों में तू सुन माही है गुनगुनी सी सुबहों में तू खामोशियों में सदाओं में तू फैला है चारों दिशाओं में तू सुन माही ख्वाबों के किनारे मैं भी आऊं तू भी यारे जी ले जिंदगी जरा सी थोड़े लम्हे गुजारे ना हो दुनिया की बातें हम दोनों और
ये तारे मैंने ढूंढा है सारा जहां तेरे जैसा कोई कहाँ रे ख्वाबों के किनारे मैं भी आऊं तू भी आ रे जी ले जिंदगी जरा सी थोड़े लम्हे गुजारे ना हो दुनिया की बात हम दोनों और ये तारे मैंने ढूंढा है सारा जहां तेरे जैसा कोई कहाँ रे सुन माही सुन माही सुन माही सुन माही and the shortest antara of my life जीना जिसे चाहता हूँ हाँ तू वही जिंदगी है कहने का मतलब तो यूं है मेरे पास हर खुशी है बस तू आ जाए तेरी कमी है सिंग रे मैं भी आऊं तू भी आ रे जी ले जिंदगी जरा सी थोड़े लम्हे गुजारे ना हो दुनिया की बातें हम दोनों और ये तारे मैंने ढूंढा है सारा जहां तेरे जैसा कोई कहाँ and it became an English version. So now that I can also call as my third global collaboration because my brother's a global artist. Of course. The stars, the sun, the moon, the sky, got nothing on the way you shine. I die for you cause every night I know you bring me back to life. I'm floating on a feeling, I'm living like I'm dreaming. If you told me you're an angel out of heaven, baby, I'd believe it. Simple but Love it. पूरा मीनिंग अलग है बट गाने से we didn't translate the Hindi, you know, we made a whole new song. Beautiful. Stars, the sun, the moon, the sky, got nothing on the way you shine. I die for you because every night I know you bring me back to life. I'm floating on a feeling, I'm living like I'm dreaming. If you told me you're an angel out of heaven, baby, I'd believe it. Oh, this is written by Natania, who's written this song with us, the English version. Oh, तो love कर रहे सब it, English, love Hindi, it. Spanish, अब तेलुगु भी करेंगे hopefully someday. हम 2023 में अमाल. मुझे तो पता ही नहीं था. You started in 2014, like properly. दो फिल्में आई थी इस साल. There was जय हो and खूबसूरत. What according to you was your first song? Was it from जय हो or was it खूबसूरत? जय हो, जय हो. Jai Ho, Salman Khan was the only one who thought that at 23 I can be a music director. Even I thought कि 32, 33 में I'll be. But so he asked me when we, वो तो अलग story I've already told you like how Jai Ho happened. But once the song was locked and all, he said, हाँ send the credits to the team and all. So I sent beats and music produced by. So he called me and said, what is this credit? So I said, नहीं तो I don't want to become composer and all. I'll be music producer and he's the singer, like how it happens in the West. He said, this is India, brother. And he's like, you will not get this credit. कूदना है तो आग के दरिया में अभी कूदो. पूरी family music में own it. Otherwise, don't do the song. I'm not doing the song. I was like, then do the song. Now that everyone knows I'm doing this film, now don't say no. But from 2014 to now 2023, there is a film coming and Salman Khan with Amaal Mallik's music. After 8 years, we're doing a song together. After मैं हूँ hero तेरा, last one he signed for me. So tell us, how is the feeling with किसी का भाई, किसी की जान? क्या चल रहा है? Just give ना अंदर का gossip बताओ ना. अंदर का gossip कैसे बताओ? मैं भी 8 साल बाद लौटा उनके पास. But मेरे लिए बहुत surprising तरीके से हुआ कि trailer आया and then I saw a tag from his account on SKF Films and all. Music में with, and for me it's a very big album to be part of. There's Sukhbir, there's Devi Shri Prasad, there's Himesh Reshamya, seniors and legends. और मैं भी हूँ उसमें. So I saw Amaal Mallik in music. I was like, ये कौन सा गाना है पहले वो बताओ और ये कैसे हो रहा है? Because I had not played him in recent times any song, but he had 4-5 songs of my bank. Then I got a call from his team कि अच्छा, that song you made in 2012, a song I made in 2012. 2012 में मैंने एक scratch दिया था एक गाने का and he remembered it and he is like, we're doing this song. So then मैंने बोला, you know, जैसे दिल चाहता मैं सैफ वाले कैसे पर वो होने लगा सेट पर मैंने तो सेट अभी 12 साल बाद तो साउंड कुछ तो करने तो क्या हो गया नहीं we already started shooting था. So the song was being shot and then I understood, then I saw like how they're shooting it and all, and so I updated the sound and all of that. तो अभी सब चल ही रहा है. Shabbir Ahmed has written it. He had written it back then also. He's the first writer who actually worked with me in my debut in Jai Ho.
एंड मैं उन्हें तभी एक सुपर हिट गाना नहीं दे पाया क्योंकि मैं भी सीख रहा था, बट आई ओ हिम दिस बिकॉज ही इज रिटन almost 20-30 of my demos which never released, and he wrote Ashik Surrender Hua for me hafte mein 4 shaniyar, but I always, he used to tell me, you know, you do love songs with everyone but me, whereas he has done Teri Meri Prem Kahani, some really good love songs. So I said, chalo, it's तो कुछ meant to बताएं, be. what is the song? It's a song it's a happy song. It's about falling in love and all. So it is obviously shot on Pooja Hegde and Salman Bhai, so it's awesome. After 8 years he felt that a song of that time, I had also forgotten it. वो but he remembers, उनके फोन में उनके सब composers के गाने होते हैं. So he must have checked अच्छा इस folder में, and he found that song and he sang it on the phone. He's like, this is the song we're doing. Now I'm going to shoot it. तुम देख लेना. And then मैं देख ही रहा हूँ अभी. It'll come soon hopefully. अभी edit और सब हो रहा है. Is it going to be sung by Armaan? No, we are not telling you who's singing yet. Right now I have sung the scratch. Okay. So if it goes in my voice, we'll know. But I don't think even I'm going to sing. Let's the best person for the song decide, which is Salman Khan. Okay. उनकी फिल्म में उनके ऊपर गाना है. Right now I think they are shooting it. So the minute they shoot and come back, I will know finally. Okay. आजकल ऐसा होता है when you shoot also, like राधे श्याम जाने मेरी I did. वो शूट पे मेरा गाना ही नहीं गया था. वो शूट पूरा फिल्म शूट तेलुगु गाने पे हुआ था. सब गाने were done on the Telugu songs. And then Mithun, me, Manan Bhardwaj, we all came into the film, saw the visuals, and then we made songs to those visuals. It was like background scoring a song. तो और उस एक सिचुएशन पे मैंने 15 गाने दिए थे और जाने मेरी गया. Like मैं बीमार, that's the time I got admitted. Yeah. I got like hospitalized, मैं exhaust हो गया था. But that's how it is with big stars and big films. Like more than anyone, I think musical stars में like Akshay Kumar and Salman Khan, who I've both worked with, both have a great ear. They know उनको और उनके audience जो fans है, what kind of music they will appreciate on them. ये मैं भी इसलिए जय हो में when I didn't taste success was because I understand his fan base later कि they like him in either Dinka Chika vibe, character डीला vibe और तेरी मेरी प्रेम कहानी हमको मालूम है, दो larger than life love songs. और मैंने कर दिया था EDM, Swedish House Mafia जैसा, which Salman Khan loved because he is updated, वो सुन रहे थे. But the audience was still growing to like that. जब हीरो किया तो understood हाँ ये सही space है, you know. That Armaan had sung a version, but this song I don't think there'll be any versions. And I might make a real version if I don't sing the final song. Maybe you'll get Salman to sing. If he sings it, then another big song again. Because see, it is as a. But do you remember like directing Salman Khan during मैं हूँ हीरो? क्या यादें जुड़ी हैं? How was it in the studio? Right now, he literally has a team that has mics and studio portable. No, ready. when you were getting मैं हूँ हीरो Yeah, recorded. but see, like right now when I went to meet him, he had all that I was doing with him. Then he has made his own music setup. Super. So he dubs on his own also sometimes and sends, and sometimes he calls you. He can dub in his house now. So at that time, I was learning how to do this. मैंने कभी portable studio नहीं बनाया. I made it because of him. Because he said, come to Panvel, we'll record here. And I was like, how will I do it in, like, with farm sounds, birds? You know, कुछ हम लोग बहुत ज़्यादा technical सोचते हैं. But we had a room, we recorded. तो वहाँ पे मैंने ऐसे कीबोर्ड में जैसे लेफ्ट राइट जाता है ना, साउंड कार्ड डाल के सब माइक्स वाइक्स ले गया था. So some bits we recorded there. He was getting used to how to sing on a mic. So पहले पूरे 5-6 बार recording rehearsals happened in Panvel and Karjat. He only used to keep recording 10-12 times till like 4 a.m. 5 a.m. starting at 11. So he knew that he's not a singer, but he will give his best. तो वो करते करते then a final take happened at Himesh Reshamya sir studio, where I called him, and he, like Himesh sir, everyone knows, a legend, and he was a very sorted person, and he said straight, हाँ go to my studio and record it, because he's comfortable doing his songs there. तो वहाँ पे record किया. Even he was in the recording with us because he was helping us position the mic. So we did a very different technique then. कि यहाँ he was standing and the mic was here. Okay. Because his voice is so powerful आ रहा था, like because they deliver dialogues, na. So the technique, which after that I don't like, I've heard him sing in many songs, but the way I took the larger than life while I made it sound like hero, bigger than hero, because he anyway has that chaudi आवाज, आँखों के पन्नों, he sings like that. So when you come close to the mic cannot handle so much power, बहुत sensitive होता है. So I made him stand 5 steps away from the mic, but increase the gain on the mic और reverb बढ़ाया मैंने अच्छे से.
So he was singing with the same power and was reaching right. बहुत पास से बहुत loud हो जाता. तो ये technique मैंने apply की तब, and it worked out well. This time I'll see if he wants to sing it, then I'll go to his house and record him. But in his house, I'm telling you, there is like a mic, there's a mic stand, there's a shield for acoustic. Sub set है अभी. Like what I started out doing with him, now he has a team of people doing it for him. You want to sing मैं हूँ hero? Yeah, okay. I love मैं हूँ hero तेरा. It's the only song which made people believe that I'm not just a dance track maker. You know, it changed many things for me. आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ मेरी खामोशियाँ है सजा दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा 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 हाय ओ तेरी वजह से है मेरी जीने की सब ख्वाहिशें पालू तेरे दिल में जगह है ये मेरी कोशिशें मैं बस तेरा बनूं बिन तेरे ना रहूं मैंने तो मांगी है ये दुआ दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा हाँ मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा हाय I was a baby when I made this, 23 years old. I'm 32 now. Yay! Welcome to But the am I 30s looking? club. Am I looking? Not at all. Not at all. Then it's okay. Loaded question. Loaded question. And you have to answer it. You can't be diplomatic. That's my problem. I've never been able to be diplomatic. Let me be for once. Achha, Are theek hai, you sir. a Salman Khan fan or a Shah Rukh Khan fan? Everyone knows I'm a very big Shah Rukh Khan fan. But Salman Khan is the man I owe my entire music career to. My reason to be a music director is him. मेरी debate 100 बार हो चुकी है. But I love Salman Khan for believing in me. Yeah. He's like, you cannot choose between the two as personalities and superstars. Both are superstars. But I have grown up being a Shah Rukh Khan fan, but I never thought in life that such a big superstar like Salman Khan can come and pick me up from nowhere and make me what I am today. So I am an SRK fan and I love Salman Khan's heart too. You know, he's a great actor in his own space, but I have always looked up to Shah Rukh Khan as well. Amazing. Very well put. Okay, we're coming to the year 2015. Jahan this young boy not just creates some amazing songs but also gets his first Filmfare Award. Yeah, With, yeah. You're wondering क्या हुआ था? Like, who's 2015 में क्या हुआ था? क्या हुआ था? हाँ यानी मैं टेंशन में नहीं आता बट मेरे को लगता है हर बार ऐसा सवाल होता तो कभी कोई अच्छी बात से बहते बहते कहीं और ही जाते बट नेवर विद उर्मिन Never. Yes. What is क्या ही हो सकता है अच्छी बातें ही हो रही है क्या करे इतने whatever इंटरव्यूज कर रहा हूँ आजकल तो अच्छे इंटरव्यूज की आदत नहीं है You're welcome. You're welcome. So tell us about this track. How important has Suraj Duba Hai been in your career, Amaal? Everything you see that is possible for me to even wear a pair of jeans, a shirt,
even shoes. How much Do you ever have this the sounds award like. here? Yeah, that's the one. It's broken, but sorry, Oh my Filmfare. God. Cricket खेलते खेलते वो That is टूटा so है. cool. That is the Filmfare Award, That guys. is okay. Let's bring it down to earth. Yeah, this Wow. was my first award, Hmm. and it's in bad shape right now, a I want little to bit. hold. Can I hold it? Yeah, it's very heavy. It's like I can do dumbbells with it. I've It's never like, held a Filmfare Award. बहुत भारी यार. हाँ. I'd like to thank my neighbors for being so kind and always making sure कि शक्कर एक कटोरी मिले. Who else would I like to thank? Thank me for giving you the award. I'd like to thank Amaal Mallik for giving me this award. No. For being the best interviewer ever. Thank you so much. Wow, this is amazing. Yes, but this was the time when I had also never seen But forget this is holding. really heavy, huh? Yeah, I can't hold Was it that the much. first thought that came to your If mind? my जब- trainer sees this, he'll be like, यही उठा लो. पर नहीं, जब ये award आपको मिला था, when you were Yeah. on stage, did you really feel that it was so heavy? I thought didn't even know. Like for a whole family, it was unbelievable that this song is done so well. यानी ऐसा हुआ था कि इस सॉन्ग में 19 दिसंबर को गाना आया. उस टाइम टी सीरीज यूट्यूब एंड इन इंडिया ओनली यूट्यूब वाज जस्ट बिगनिंग आउट. एंड हम लोग से गलत मिक्स अपलोड हो गया था. वो मोनो बज रहा था इंस्टेड ऑफ स्टीरियो एंड 1 मिलियन व्यूज आ गए थे जो उस टाइम पे यानी नॉट दैट मैटर्स नाउ बट दैट टाइम इट वाज अनहर्ड ऑफ कि 10 लाख people have viewed the song in one day. Till now, so it took 7 years, by the way, to tell all the young people, it took 7 years for Suraj Dubey to cross 100 million. Wow. 7 years, but the value on stage is $1 billion when I sing it. Absolutely. So, ये तब हुआ 19 दिसंबर को. It was very funny. ये story किसी को नहीं पता कि the song releases, the audio went wrong. भूषण जी called and said उतारना पड़ेगा गाना वापस, re-upload करना पड़ेगा. You can't reinstate views. Today you can maybe. कुछ glitch हो जाए, they'll keep the number locked and you can put a new audio. The video got removed in the night, next day, and it became 0 views again. So I was like, something keeps going wrong, like Jai Ho nahi chali, mere music nahi chala usme. Khoobsurat mein bhi, like I did Naina, but on the radios they didn't mention my name. They thought it's someone else's song from the album. So होते होता ही नहीं है यार, ये क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा काम तो कर रहे, सो रहे नहीं है 25-25 दिन, और यानी डेडिकेशन में कुछ बचा ही नहीं है कि और क्या जान दे सकता था, और इतनी हालत खराब थी कि आई हैव गिवन इट ऑल. एंड देन आई लेट गो. आई टोल्ड क्रिश, हु इज माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, एंड हाशिम, हु इज नाउ द क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑफ माय म्यूजिक वीडियोस. दे वर विद मी देन आल्सो. एंड हम लोग की एक दोस्त का बर्थडे था, योगिनी. आई रिमेंबर. दिस इज अ वेरी पर्सनल स्टोरी. And she went and played it in some club. She said, my friend's song released today, and no one knew who I am. No one. I said, क्या कर रही है पागल, बर्थडे तेरा है, उस तो परफॉर्मेंस देगी इस गाने पे. And she did that, and then next day this happened, and I was like, छोड़ो यार, गोवा चलते हैं. न्यू ईयर व्यूअर खराब कर दिया इस चीजें, री-अपलोड ने मूड, छोड़ो नहीं चल रहा है गाना. And Ranbir also was busy. He never came to promote the film much. So I let it go. I said, देखते हैं क्या होता है. I'm not too hopeful. 10 days later, so we went to Goa. 3rd day only, 23rd. Extra पहले चला गया मैं कि न्यू ईयर क्या, क्रिसमस भी नहीं आया, हम गोवा पहुंच गए बिना वजह. And my friends, it's a very, like, I'm on the legal drinking age. We can drink. So I will tell you a story. We were then also. My friends who were like from Goa, they had a crate of beers. If you return to a shop, you would get money back for those bottles. तो उन लोग ऐसे करके अपना डेली बियर्स पी रहे थे. मतलब कैसा ट्रिक है यार. दे वर ओनली एंजॉयिंग द डे लाइक दिस. सो वो देने गए, जब मैं उनको एक्टिवा पे लेके गया, ऐसा चल मैं ले जाता, आई लव राइडिंग इन गोवा. तो ऐसा ठीक है चलो मैं जाता हूँ. तो मेरे से बैग से उठा, ऐसे तू भी चल लेने, इतना भारी है. सर मैंने नहीं पिया था, मैं क्यों उठाऊँ. मतलब ऐसे मैं सिर्फ देखो, नहीं प्लीज कम. तो ऐसे टुक इट. वी बोथ वेंट, पुट द क्रेट्स देयर. तो जितने बॉटल्स आप वापस देते हो उतने आपको कि 500 वापस रुपीस मिल रहा है. उससे जाके इन लोग गधे वापस दे बाइंग द ड्रिंक्स. आई वाज लाइक, बड़े ही चिंदी मेरे दोस्त. बट इट वाज वर्किंग. सो वी वेंट टू दिस प्लेस, एंड एक अंकल आए इन, लिटरली द स्टोरी इज अनहर्ड ऑफ, इन अ रेड गंजी एंड ग्रीन शॉर्ट्स, जो दुकान के मालिक थे. एंड ही लेफ्ट हिज फोन देयर एंड ही टुक इट इनसाइड. हाँ चेंज लाता. उसके फोन पे बचा, और मैंने हाशिम को देखा, और मैं उनके वो पूरा छोटा सा बाहर या जो भी था जाहिर, मैं ऐसे भागा हूँ, मैं पागल जैसे अनिल कपूर दिनादिन था किया मैंने. ऐसे अगर ये ऑडियंस जो है ना,
अगर इसके पास इतना यो मॉडल, like people say it's very yo sounding, you know, that time it was very new. They word coin कर दिया, it's too yo man for Indian audience. I said yeah I know but maybe the audience might wake up. जब वैसे ऑडियंस ने सुना ना गाना, उसका रिंगटोन था ऑलरेडी 4 दिन में, 24th की बात है, तो then I was like कुछ तो पहुंच रहा है, यानी there's a chance. And then I told him, I said bro, our zone, our audience तो loves it, but if that audience is liking it, we're home. Because EDM के सब हम लोग अविची, स्वीडिश हाउस माफिया सुनने वाले पब्लिक है, and these are people who listen to नदीम श्रवण, जतिन ललित, अन्नू मलिक वाला म्यूजिक. Said if they are connected, इसका रिंगटोन है ना, I said चांस है अभी भी गाने को. Cut to 30th morning, we are deciding कि न्यू ईयर क्या करना है. एंड में हम लोग का न्यू ईयर रोड पे हुआ 12 बजे. क्योंकि ट्रैफिक इतना था गोवा में, उधर ही हम लोग ने न्यू ईयर और केक भी काटा, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट बिग रिलीज व्हिच हैड अ बिग हीरो आफ्टर लॉन्ग. एंड वी वेंट टू अ प्लेस एंड उधर बजा. फिर मेरे एक दोस्त यश नार्वेकर जो सिंगर है, he's like, and the way he talks are limited. Baba! Like that he called me. He's like, I'm in Lonavala, Baba! I was like, what's happening? And he's like, every bungalow is playing Suraj Dubai, Baba! I was like, are you serious? He's like, I'm on bungalow number 6, but 7, 9, 11, 12, at 12, I've all played this song. I was like, bro, don't mess with me. And तब ना वीडियो कॉलिंग कुछ आ रहा था, like FaceTime ही था. व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल फीचर नहीं आता, ऑडियो कॉल होता था. I was like, एक बार मेरे को प्रूफ दे, तू झूठ बोल रहा है, दोस्ती है, मेरे को चढ़ा रहा है कि गाना चल रहा है. He's like, तू रोक. And he FaceTime called me and he said, अभी रोक, अब मैं बंद करता हूँ. बंद किया, वो बंगलो में बज रहा है. He's like, देख अभी पूरा खत्म. वो बंद हुआ and literally waited 6 minutes and 3 bungalows had played it there. 3 bungalows played there, me here in 7 bungalows. Couldn't believe Goa. I was like, इतनी छोटी जगह से जो गाना बना है, वो कहाँ बज रहा है. And when that happened, I was like, now let's see what happens. And then the song, and I'm telling you the full journey. ये हो गया. Literally मैं पहली बार, DJ Chetas knows this. In one of his sets, I went to perform at Penthouse in Pune as a guest performer at that point of time. And he's been my friend for a while. So he said, bro, you have only a 5-minute slot. ना इसमें मेरा पूरा set भाग गया. I said, हाँ ठीक है. And I sang and I saw people's reaction and the club go wild कि ये क्या गाना है. And they had all obviously understood कि अरिजीत का कोई नया गाना है. अरिजीत on top form. But no one thought कि अरिजीत ऐसा गाना गाएगा. You know, everyone thought कि तुम ही हो या कभी दो बादल बरसे या तेरा ध्यान किधर है, Indian, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड. But EDM, this was a space that was not touched by him also. वो गाना उधर भी I saw the response. Slowly I went and got handsome then on that. मैं इतना खुश हो गया पागल जैसे. I have no work at this point. No film signed, no one's called me for anything. I buy this dog who was quite expensive. And I'm standing with the doggy outside the house. मम्मी ने हम दोनों डॉगीज को बाहर रख दिया कि एक ही गाना है, इसके मंथली खाने का you cannot afford. What are you doing? ऐसे नहीं, अभी आया, अब यही खुद का खाना लाएगा कैसे, he'll make me capable or whatever. ऐसे इसको खिलाना तो मैं कुछ बन जाऊंगा. She was like, you are an idiot. That's all I will say. And we got handsome home and I went out straight. Getting him got me responsibility. I was like, अभी एक छोटी जहाँ नहीं है घर में. I said, मेहनत करना ही है, कहीं भी जाते we'll get work. But everyone wanted EDM from me. तो उसका सक्सेस पैराडॉक्सिकल भी था कि वही जॉनर चाहिए था. और साथ में हर दिन मैं बोल रहा मैं रोमांस करूँ प्लीज, एक I want to do that song. नहीं ये करो, ये जो, और वो गाना बड़ा होते जा रहा है मेरे सामने. So I'm loving it and I'm tripping out कि now what will I do? And that song has literally put food on that table of our house. Saved the, like we lost 2-3 cars got sold. The houses were sold. We are at the last and last of everything. एंड आई रिमेंबर जय हो के बाद मम्मी ने एक बार बोला था कि ना बस एक दिन वो देखना चाहती हूँ कि कहीं डीजे कोई तेरा कोई गाना बजा दे ऐसे. एंड दिस सॉन्ग बिकेम दैट. एंड अभी कट टू माई मॉम्स कॉल्ड मी व्हेन शी वाज इन दुबई दैट हम लोग थक गए, सब गाने तेरे ही बज रहे थे इस पार्टी में, सब तूने जो सुना है 2-2 साल पहले वो अभी चल. बात है यार. दैट सॉन्ग मेड मी बिलीव आई वाज लीविंग म्यूजिक. मैं एमकॉम के बुक्स के साथ गया था भूषण जी को मिलने और मैंने उनको बोला था मेरे पास 5 रोमांटिक गाने. ही सेड आई हैव मिथुन, अंकित एंड जीत. आई डोंट नीड अ रोमांटिक कंपोजर, आई नीड समवन हु डज यो हनी सिंह और प्रीतम काइंड ऑफ म्यूजिक. एंड मुझसे वो बना कैसे, वो हुआ कैसे, कुमार ने लिखा कैसे, वो this whole house, everything, not monetarily, but to be able to even do a show later, to able to even call myself a music director. मैं छोड़ दिया था म्यूजिक. I was going to New Zealand to, I told my मासी बर्गर बेचूंगा, पेट्रोल पंप पे काम करने, क्योंकि इधर सब लिखने लग गए थे. The media is very unsure of what to write. कभी कुछ भी लिख देते. I didn't give interviews to those guys for so many years because they made
अगर मेरे साथ कर सकते जिसको आप बोलते हैं कि लेगेसी है, ये है, सपोर्ट है, तो नए बच्चे के साथ आप क्या लिख दोगे? मेरे को लिखा नॉट अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक आफ्टर जय हो एंड ऑल. अमल मलिक कैन नॉट मेक म्यूजिक लाइक अनु मलिक, डब्बू मलिक. Son fails. Then kick happened and Prem Ratan appeared. Salman Khan doesn't repeat him. So they just tried to do this to me. And I'm 23. I was like, मैं एक दो गाने में जज हो रहा हूँ. सर कितना म्यूजिक है अंदर इन लोग. So it's just I was like, forget it. म्यूजिक नहीं करते. Not for me. And my dad, everyone in that field, कि even Amal couldn't make it happen. The legacy ends here was the feeling for my father. And my mummy is like, I told you, you have to do your degree. I said, I've done BCom. He's like, no, this is over now. It will not happen. Once you're in a big film and you flop, don't expect anything. Start studying. I went back to Preetham, Salim Suleiman, anyone to just ask, keep me back as an assistant, do something for me. I have no work. I want jingles. I started doing jingles again at 20,000. But that song came and it kept rising, rising, rising. And I was also resilient कि मैं कुछ नया दिखा देता हूँ इस साल में, नहीं तो हम I did जिंदगी आ रहा हूँ मैं. I said singles में मैं करूँगा वो साउंड वापस, और आतिफ के साथ किया, टाइगर के साथ. But then I did मैं रहूँ and मैं हूँ हीरो तेरा. So सपोर्ट में एक बैलेंस बन गया कि इसको he is a good मल्टी जॉनर कंपोजर. तो मैंने एल्बम दे दी उस साल बिना एल्बम दिए, नो कि एक एल्बम में आप रेंज दिखाते हो, मैंने 6 गानों में देखा. But Suraj Duba is the reason this guy didn't quit music, is the reason this house could put its food on its table and it could bring some, make my father's eyes from here to here, ki, you know, he can hold his head high. That's all. That song did everything. That is so amazing. It's so inspiring. And if I may say so, I need water. I've spoken too much. But it's very like मैं नहीं करता म्यूजिक. मैंने भूषण कुमार सर को बोल दिया था कि सर अगर ये वाला भी नहीं चलता है ना, तो आई नो कि मैं इतने सालों से I am choosing music, but music is not choosing me now. I said I've given myself so many chances, but this industry, forget this profession doesn't want me. I think I said मैं म्यूजिक को 8 साल की उम्र से चुन चुका हूँ. I wanted to be a cricketer, no doubt. तब IPL होता तो मैं वो भी कर लेता. But I have chosen music for 15 years, 8 to 23, 24. I said अब इस गाने के बाद भी I know my writing, Trinity College, Western Classical, सब सीख के समझ के in my capacity तैयार आया हूँ मैं. बट फिर भी अगर म्यूजिक मुझे इस गाने का नहीं चुनता, नहीं चलता ना, and I told him don't release it first. I said release please Ankit's and Meet Brothers songs, their songs will work, तो मेरा शायद चल जाएगा. But he was like, नहीं, New Year time है, this is the sound, we are doing this. So it's his conviction also कि he also believed. So for me in the industry मैं ये भी कहता हूँ कि you know, after Salman Khan, if someone has a label थे वो, but who believed, you know, was Bhushan Kumar के Suraj Duba. He understood. And we have had like almost 80-90 great songs together. हम लोग का थोड़ा अंत बंद होता है, you know, कि मैं remix ना बोलता तो भड़क जाते. It's like तुम छोटे हो मेरी बात सुनो, you know. But he was the one who gave Suraj Duba the positioning. And when I left that room, I remember they said कि, और मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मेरे को C grade D grade भी नहीं ऑफर हो रहा था. Forget that cinema. मतलब कहाँ A grade फिल्म मिलेगी. And he said रॉय के लिए लॉक कर दो, कुछ मत साइन कर दो, ये जो मतलब हाँ whatever. Came to the lift, ऐसे पता नहीं रॉय क्या, ये क्या नाम है, ये कौन सी फिल्म है, मैंने सुना ही नहीं. And the lift shut and it showed Ranbir, Arjun, Jacqueline. And I went behind. I was like, I have a big film. Yeah, this was like a film is my scene, song in that? I said, is this even possible? But it's a dream run. उसके बाद मेरे को responsibility आ गई कि अब ये हो गया ना. I told myself ये चल जाए या ना चल जाए, space up दे. ये चला तो मैं 1000% बीमार हो जाऊंगा म्यूजिक करके, but छोड़ूंगा नहीं. पर नहीं चला तो स्वीटली गुड बाय. न्यूजीलैंड के किसी फार्म में बैठे होते, आलू गिन रहे होते हैं. आलू गिन रहे होते. But you have to listen to this track, the track that has broken all records, has made Amaal Mallik. Truly. हो जाए. मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी. मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी. कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ.
with me सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो रास्ते भुला दो सारे घर बार के सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो हम तुम भुला दो सारे संसार के ask me for anything I can give you everything रास्ते भुला दो सारे घर बार के चले नहीं उड़े आसमां पे पता न हो है जाना कहाँ पे की बेमंजिले हो सब रास्ते दुनिया से हो जरा फासले कुछ खुद से भी हो दूरियां सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो रास्ते भुला दो सारे घर बार के सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो हमको भुला दो सारे संसार के ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आह, क्या सब बात गानों के है। अकूस्टिक वर्जन्स यही मिलेंगे आपको उर्मिन के And साथ this is the first time I have sung Suraj Duba Hai with you ऐसे, because we are not used to this track ना ऐसे, we're You're like just used to like- Suraj Duba Hai मैंने बोला डूबा है यारो वाह 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 बहुत बढ़िया। So after amazing track एक और साल आता है and this year has been a very अब ये कौन सा heavy साल है 2016 You have my discography better than me I don't remember anything except this morning Urmin interview most important that was Yes. but एक full-fledged album like MS Dhoni Yeah. and I love this expression because it is an album It that is my only belief Most- best like where I got to be me the most I could be me Yeah, but batao, like in a time where you know there were multi composers doing so many tracks, and I think this trend started with Ashiki 2. Yeah. Ankit Tiwari is there, then there is Mithun and Jeet Ganguly, Yes and आपको एक full-fledged independent Baby solo, को हाँ, Baby था मैं 25 में मिली है चलो। MS धोनी मिलती है. What was running through your mind? Was there pressure or were you like? मेरा "अब एटीट्यूड करते आप हैं"? मनोज मुंतशिर सर ने एक इंटरव्यू में भी बोला मैंने एक गाना करके बोला हाँ डन ना एल्बम लाइक मैं तो इतनी हाँ. मुझे कहाँ बुलाएंगे पूरा करने तो ही सेड बेटे तुम पागल हो इधर आओ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है गहराई इस फिल्म की एंड बट दैट वाज हाउ इट वाज लाइक उस फिल्म में भी आई वुड से सी आई एम समवन हु हैज बेनिफिटेड फ्रॉम द मल्टी कंपोजर ट्रेंड मुझे डेब्यू मिलता ही नहीं जय हो में भी साजिद वाजिद सर हैडंट अग्रीड टू लेट मी कम Yeah. सलमान सर वांटेड अस टू डू दैट सॉन्ग अरमान sang it बट एज अ कंपोजर मैंने 2 गाने किए जय हो में तो वो होता ही नहीं अगर इफ दे हैड नॉट अग्रीड सो दे वर काइंड इनफ तो मल्टी कंपोजर अगर फिल्म के लिए सही और अच्छा गाना होता है तो why not I've done Badrinath like that Golmaal like that Kapoor and Sons like that with Orko Rochak Tanishq all these guys but biopic जब होती है I think I believe कि किसी की एक real life story if you're doing if not me anyone it should be one composer Yeah. अच्छा होता है like soundscape और एक homogeneous album बनती है so जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी obviously the talks were रहमान सर and प्रीतम दा That's what I was hearing about it. And मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं ट्राई भी क्यों करूँगा मुझे थोड़ी मिलने वाली MS धोनी लाइफ उसकी जिंदगी की पूरी पिक्चर मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन सर मुझे शायद ये फिल्म थोड़ी मिलने वाली है मैं तो पूछा ही नहीं आई नेवर वेंट आई न्यू भूषण जी इज प्रोड्यूसिंग द म्यूजिक एंड को व्हाटएवर वर्किंग विद नीरज पांडे सर एंड ट्रिकी थी यानी नो चांस दैट मैं गिनती में नहीं हूँ यहाँ पे इस रेस में ही नहीं हूँ नीरज पांडे सर कम्स टू मीट भूषण कुमार आई एम डूइंग 2 लफ्जों की कहानी ऑन द अदर साइड विद मनोज एंड जस्ट ट्राइंग एंड आई मेक द सॉन्ग कुछ तो है जो नींद आए कम एंड ही hears it and he says I love this song just hold it for me so and he was producing 4-5 फिल्में so I never thought इसमें धोनी में तो बस रॉक सॉन्ग यानी एंथम्स ही होंगे like you know चक दे types but I didn't know it was his also life was very beautifully human यानी सब कुछ देखा उस इंसान ने I said okay sir you like it यानी हमने अभी तक पिच नहीं किया but it's yours मुझे बाद में पता चला कि मैंने वो गाना कंप्लीट करके जब दिया कि वो गाना नीरज सर forgot about it because he got busy and Bhushan ji and I without remembering that we had played it to him made a mistake and we gave it to Do Lafzon Ki Kahani where it became a stupendous hit no doubt but he got
hurt, you know, कि तुमने मुझे सुनाया था and how can you do this? I was like, sir, मुझे तो पता ही नहीं चला कि यानी just, and I was a kid, I couldn't, ये चीजें मैं सीख रहा था कि I was playing my music to everyone excitedly. How I connect with you and I play you all my music, I was playing to anyone who would come to that sitting room, you know. So I said, sir, गलती हुई. He's like, नहीं, इससे अच्छा गाना, यानी I wanted for Dhoni. I was like, what? Did I just screw that up? I said, धोनी गई, यानी आई कब गई कब, यानी ऐसे कैसे हो सकता है? He said, MS धोनी के लिए हम कब से इधर, तुम्हें नहीं पता हम आते हैं मीटिंग करने की, कौन कंपोजर रहेगा, ये चाहिए था मुझे, अब रहने दो, I don't want to work with you, you're not professional. It's like, then I understood that I'm not professional. Then I understood कि ऐसे नहीं करना है. And then I was like, shit, आई भी नहीं और चली भी गई. Then he comes to narrate the film, and in the room there are 6 composers who all are the favorite Turks of T series. And at this point of time, all 3 of them are the icons of romantic music. They have done Ashiki, which is Ankit, Jeet Dada, and Mithun. And there is Meet Brothers, and I just opened the door galti se. You know, Bhushan ji, I'm here, what's up? And he's like, हाँ तुम भी आओ. It just happened, I'll tell you. So he was just making all the people he works with, because there was no time being given maybe by the bigger composers. And these are the young, new guys, obviously experienced more than me. मैं 3 songs old था. He said, हाँ तुम भी आओ. So then he said, नीरज इन सबको brief दे दो, multi composer करते हैं, and we will make it happen. Because if we are not getting dates, because ऐसा भी होता है कि बड़े composers are doing important films also, they can't do all. Pritam Da can still do all because he is a genius, plus he has a team. There's many things. Rahman sir sometimes maybe not here. Whatever their reasons, they were not getting their dates possibly. और मेरे को पता है किसके लिए बना. I'll tell you now how the brief happened. So Neeraj sir also was confused, like how to narrate to 6 composers. They said no, we have broken down the situations. The romantic song will be done by Mithun sir. Ankit will do one other romantic song. Jeet Dada will do another romantic song. पढ़ोगे लिखोगे गाना, तो मतलब वो डांस वाला टाइप में भी मीत ब्रदर्स विल डू. एंड वो जो रॉक गाना है नीरज अमाल को देना, वो बेस्ट करेगा, यंग है. भूषण जी सेड वो रॉक अमाल करेगा. मैं रॉक ही हो गया, वो पहले मैं ईडीएम हूँ, फिर रोमांटिक हूँ, रॉक, मतलब अभी तो 7 गाने दिखा है कि कर सकते, मिल रहा ही नहीं है क्या, ऐसा मुझे पूरी करनी है यार ये फिल्म. यार चलो ठीक है, ऐसे पर रॉक वाला गाना क्यों, मैं भी रोमांटिक, जस्ट दिन मैं रहूँ, मैं हूँ हीरो तेरा, सब तेरा, बोल दो ना जरा. I was like, अभी भी नहीं सर, अभी भी मैं नहीं हूँ इस रेस में. ऐसा ठीक है. तो I was like, okay, ठीक है, एटलीस्ट इतनी बड़ी फिल्म का मौका मिल रहा है, why the hell not. एक ही गाना करना है तो एक ही सही. He narrated the briefs and Neeraj ji left. While going, and they were very busy with lot of work. I had my substantial amount of work. मैं बद्रीनाथ कर रहा था और नूर कर रहा था. और बद्रीनाथ मेरे को सोलो मिलने वाली थी, पर वहां मैंने, I'll tell you now how Tanishq Bagchi and me also come into the picture, where me and Tanishq were friends at that time and still are. But we were discussing he was doing very nice production for Pritam and other composers and very good at remixes. They wanted 2 remixes anyhow of Tamma Tamma and that. I said I can only do Ashik Surrender Hua and I'm busy with Noor. I said I'll do on a later day. I said, but if you really are adamant on this, you take Tanishq and do the remixes. And that's how Tanishq and me came into. I gave my whole solo film like that. Azim and Tanishq began their journey from there. Okay. And they made Tamma Tamma and Badrinath Ki Dulhan as title song. ताकि मैं नूर और धोनी पे फोकस कर सकूं. I said, I can't do it. I'm not good at dance remixes. He's terrific. I said, you give him a chance. I will go and do something else. So for MS Dhoni, you were only told to do one song. Yes, and but which one was it that you did? Parwaa Nahi, they wanted me to do that rock song. So I was like, Badrinath मेरे को सोलो मिल रही है, but मेरे को ये मेरा जोन का है, यानी I am learning how to be तोहार हमार and all that with Shabbir. So I made one song, and उसके बाद I am doing Noor's full album. So I'm like, full album पे मेरा दिल full albums पे ही था. And then they had offered me full, but they wanted to do those remixes. So I said, let's make it a multi-composer. Akhil भी आया था. Akhil came to play me सुन मेरे हमसफर with Shashank. Yeah. And I said, I'll produce it for you. Such a good song. So हम लोग सब as a brilliant team हम लोग ने काम किया तीनों ने, and Azim supervised. तो मैंने वो फिल्म छोड़ी, मैं like मेरा हो गया ना. I said, I've sung Ashik Surrender, first time Varun Dhawan with Shreya. I said, I don't need anything more, done.
I went finish Noor, and here Neeraj Pandey, while this meeting exists, everyone disperses. He says, I want to tell you one thing, that I am looking for a single composer. I don't know what is the setup here, but I don't think many composers can do such a film. One of you all will be doing it, I don't know who. But just to tell you, because you made that song, I will give you this much. This is a small idea that I am a director who has made Wednesday, Special 26, and which other movies, Baby, and some films. It's like which doesn't have music. This is the first time I am wanting 7 songs. The whole world knows me only for my cinema and good background score. I have never done music in my films. So I have to do the best, and it will take your blood, sweat, and soul away, whoever does it. So be prepared if it comes to you. And I said, yeah, sir, I'm ready. I'll do another rock song. He's like, yeah, okay. So he also smoked. He said, yeah, अभी भी one पे अटका है. मैं पूरी की बात कर रहा था. Because I knew it was not easy to get such a big film. I was like, बोल रहे हैं, but कभी भी last minute if a big composer says yes, the chance of the young boys is not there. And then, and he was still hurt very badly. And it was true. He was very hurt. But hurt मत बोलना. He was very hurt that मैंने वो कुछ तो है दे दिया था. तो इसलिए वो गाना गया. सर हाँ सर शूट हो गया. लाइक उससे बेटर नहीं बना सकता तू. सर ऐसा मुझे लगा था तब, बट मेरे पास उससे बेटर है. एंड आई प्लेड हिम कौन तुझे प्यार करेगा. एंड ही सेड व्हाट, दिस इज बेटर. आई सेड हाँ सर. इज लाइक पर मेरे फिल्म में रोमांस से ज्यादा बहुत चीजें. एनीवे keep this aside, this is nice. So then I didn't play that to anyone and I waited. And then Manoj sir called me because he told Manoj sir कि वो जो तुमने गाना बनाया उसके बाद बैठ के just see. From that day we started sitting and 3 days we sat and I made a song called Besabriya. And बाकी composers भी they were must be doing not doing, they were busy. No one sent a track or called Neeraj कि कुछ बना है maybe. And I said कि sir Besabriya बना है यार ये गाना बना है which आप सुन लो बस मेरे को. ही सेड आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग, आई एम लुकिंग फॉर द 19-year-old का गाना कि वो जब बड़ा हो रहा है. वो मेरे को थर्स्ट एंड वो पैशन वाला गाना चाहिए. रोमांस यू लॉक इट, बट हुएवर इज केपेबल ऑफ दैट, आई वांट दैट सॉन्ग फर्स्ट, आई एम शूटिंग दैट. वो गाना बना. ही केम एंड ही सेड, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज आई एम डूइंग द होल फिल्म. ही जस्ट सेड, ही जस्ट शोक हिज हैंड लाइक दिस, तुमने सुर पकड़ लिया फिल्म का, पूरी करो. एंड आई वाज लाइक फुल फिल्म MS धोनी. और अब मैं डर गया सर, अब पूरी कैसे करेंगे. अब तो 2 गानों की आदत हो गई है. 2 मास्टर देके गोवा चले गए, हिमाचल चले गए. सर पूरी फिल्म 3 months 27 songs later we chose 7 songs for Dhoni. 3 months में me and Manoj made 27 songs which were approved, rejected and उसके rejected भी अब तक आए नहीं. उसमें से सिर्फ 5 आए. So 12 have come, 10 songs are still with me. Wow. So Bhushan ji, Neeraj Pandey every evening would come. We would sit 8 hours a day, me and Manoj ji, and they would come Chamtod to hear the songs. तो वो 27 गानों में से बने कौन तुझे, फिर कभी, जब तक, बेसब्रिया, जब तक का अदर वर्जन, परवाह नहीं, पढ़ोगे लिखोगे. And MS Dhoni happened. But it took 3 months, dedication every day, 27 songs 2 लोगों ने बनाए. तो वो मिली सोलो फिल्म. तो ऐसा ही करना पड़ेगा. एंड यू नीड अ डायरेक्टर लाइक हिम who gave that much time. But worth it, Amaal. Seriously. It made me everything. Like after Suraj Dubha, अगर एक बड़ा next turn चाहिए था लाइफ में कि हाँ he can do what every big composer can, that this young boy also has an ability to do a solo album. So it happened. So what are we going to listen to? Besabriya, man, the song that got me the film. Always. कि मेरे को film मिल गया. And I was talking to my friend that evening, Kahan, his name is. हम लोग बैक रोड लोखंडवाला पे कहीं गाड़ी पार्क करके, मैं तेरे को पता है मैं कौन सी फिल्म कर रहा हूँ. And he had just come from America. No way, bro! Like MS Dhoni. And I was like, now I'm sounding like Ravi Shastri. But I said, I'm getting to do another sports film. Like Azhar had started working. बाद में आई वो. But I said, this is my chance to do it all, bro. I said, so wish me luck because I begin Dhoni today. और मैंने फिर कोई फिल्म नहीं की. Listen, quick question. Yeah. Do you think we can do a mashup of Besabriya and Sab Tera? इतना भाग ही चले गए आप तो. Suddenly याद आ गया मुझे. Besabriya and Sab, inspirational love. I can do anything. ऐसा नहीं है, mix तो मैं कर लूँगा. But why Sab Tera? Really? You like Sab Tera? I think it's got the same vibe.
तो then let's do फिर कभी and बेसब्रिया from अच्छा, the done. album only. Done. बाकी बाद में बात करते हैं. वो टाइगर और मेरी अच्छी एक स्टोरी है. We need 3 days for these interviews. I agree. What if I try to do a mashup of all the songs of the melody ones of Dhoni? Why not? But begin with बेसब्रिया. I'll try. चलो. होता. This is बेसब्रिया, the song that I made that got me the entire soundtrack of MS Dhoni. Is this. रास्ते भागे पाँव से आगे जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे रास्ते भागे पाँव से आगे जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे क्यों सोचना है जाना कहाँ जाए वही ले जाए जहाँ बेसब्रिया बेसब्रिया हाँ बेसब्रिया ओ बेसब्रिया क्या ये उजाले क्या ये अंधेरे दोनों से आगे हैं मंजर तेरे क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे तेरी मशाले अंदर तेरे क्यों ढूंढना पैरों के निशान जाए वही ले जाए जहाँ बेसब्रिया 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 हो बेसब्रिया ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है ये तेरा है ये लम्हा मैं जी लूं जरा तुझ में खो या रहूं मैं मुझ में खो ही रहे तू खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी तुझसे मिलता रहूं मैं मुझसे मिलती रहे तू खुद से हम मिलेंगे फिर कभी हाँ फिर कभी ओ हाँ फिर कभी हाँ फिर कभी जब तक तेरी आँच में बूंद बूंद मैं जल ना लूं जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चल ना लूं हाँ मेरे पास तुम रहो जाने की बात ना करो मेरे साथ तुम रहो जाने की बात ना करो ओ ओ ओ ओ ओ ना 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 तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ हवा के जैसे चलती है तू मैं रेत जैसे उड़ता हूँ कौन
कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ मेरी नजर का सफर तुझ पे ही आके रुके कहने को बाकी है क्या कहना था जो कह चुके मेरी निगाहें है तेरी निगाहों पे तुझे खबर ना बेखबर जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरता हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ मिक्स विद कुछ तो एंड कौन तुझे इस थीम ए आए हा ओ आ ओ ए आ क्योंकि वो भी शायद इस एल्बम में हो सकता था बट Love it, love it, love it, love it. My you. God, Amaal. ज़्यादा लंबा हो तो was कॉपीराइट क्लेम आ जाए amazing. लेबल से but the What? whole album just again for me How are you so single, yaar? I love it yaar it's the best life no one tells you when to wake up no one tells you when to do music everything like obviously it's not very happy but sorted you know obviously when you have love itna love I have to give koi hai to aa jao You started your career immediately after 10th. yeah Do you regret it? Do you regret not having that college life? that time I and- regretted a little bit but I have still enjoyed college life and fun life more than Armaan started his life's career at 10 years of age Sare Gamapa Little Chance famous people hounding him so I would say that he has still not had fun I balanced fun more than work I've never like even my music career I've had fun I've worked once the song is locked I give it my all till then I'm like dil se bana raho you know when anyone likes the song also great doesn't like it I never even repitch that song मतलब I'll make a new one I don't know how to sell my music again और वो मैं कहीं और release कर तो वो चल गया तो चल गया so I've been like that happy go lucky but yeah my responsibility I'm happy that my father told me at 16 and my dad that time my grandfather was passing on many things were happening he was not interested in his career he was like forget all these films forget everything my music is dying Yeah. please step up as the son of the house and do something and I said you don't worry I'll bring you 10,000 rupees every day or every week whatever so I went and my journey began with Raju Singh Ashish Rego I did assisting as background score for Mile Jab Hum Tum But what about the darkest times in the industry? How did you cope up with that, Amaal? I was thrown into it. So, you know, आप अंधेरे like from thinking कि अब मैं college जा रहा हूँ and bunk and watch a movie at PVR Cinemax and just suddenly thrown into this dark yet powerful yet glamorous industry. But music is always a difficult thing because आपके गाने पे ही हीरो की स्टारडम है आपके गाने पे ही उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस थे बहुत इट वाज वर्किंग लाइक दैट आशिकी का म्यूजिक चला तो आशिकी चल गए तो डिमांड म्यूजिक से ऐसे टाइम पे एंटर्ड वेयर देयर वर एवरीवन वाज लाइक डूइंग व्हाट वर्क आई वाज लाइक अ बेबी आई एम सिंग बजरंगी भाईजान दिलवाले प्रीतम दा जीना जीना बदलापुर सचिन जिगर मिथुन अंकित जीत गांगुली आशिकी इन सब के प्राइम में एक बच्चा कदम रखता है तो मेरी तो ऑब्वियसली थोड़ी फट रही थी आई वाज लाइक बट बेस्ट करूंगा दैट वाज माय एजेंडा आई नेवर लुक्ड लेफ्ट और राइट बट दैट थिंग that point of time when I started jumping into the industry as an assistant was the dark part. I would say when I became a composer, it was just competition and doing my best and all. But that 16 to 23, I saw the worst of this place and the best. And I would say my dad, I would say a big thank you to my dad because all the things I didn't do from 16 to 23, I'm doing from 32 to 40. You've I'm always- enjoying my life now as 16-year-old me.
So you've always, acknowledged, and there's so much of love in this family with your brother and with dad. Yes. But what about Anu Malik? What about him? He's the greatest. He's the greatest Malik in terms of musicality. I don't think anyone in our family matches to 3,500 Yeah. songs. Have you all had मैं discussions? 108 पे हूँ. Have you all मैं थक चुका हूँ. have you all sat and had discussions on, No. music ever? But he called me during Suraj Dubai, Like, we are still in competition. He's Anu Malik, I'm Anu Malik. A new Malik. So it's Oh. there. I think one thing to learn from him is his madness towards relentlessly not giving up. और अभी भी आके, like when I did Suraj Dubai, I said, "You killed it, very nice." He had called me. I said, पर मैं ला रहा हूँ एक गाना जो सबको हिला देगा, मोमो के धागे के. So you have to bow down to know कि as a human being is little dicey and dangerous. यानी वैसे हाथ पकड़ लेंगे इतना बड़ा and थोड़े like Indian Idol और इन सब पे he comes across, maybe that's the character he has to play. Comes across as quite rude and dangerous and like Simon Cowell vibes. But as a musician, I would say Malik surname, Sardar Malik obviously is the main ingredient in all our lives. But the man who debuted at 1977 with Hunter Wali Sandisan, Anu Malik, was resilient for 15 years till Bazigar. मैं नहीं कर पाता, मैं एक साल में हार गया था, म्यूजिक छोड़ रहा था. So there's lots to learn. कि 77 में डेब्यू करके at a time when लक्ष्मीकांत प्यारेलाल R.D. Burman are there, similar situation but more greater. Like he has debuted then and in 1992 tasted success with Bazigar. Till then nothing. Bazigar and Tere Dar Par Sanam. That film which was a TV film. Yeah. So we have not had too many interactions. हम लोग मिलते हैं. We don't every day meet and discuss music. I think today also he takes me as, or anyone who's going to debut also now as competition. At his age, being in his mid 60s, the man has done all kinds of music. He's done Border, Refugee, people forget. He's done Ashoka, where people sometimes think it's a Rahman soundtrack because the soundscape is not very Anu Malik. So he's done tremendous work. वो जो Malik tag आया है, उस इंसान का sacrifice, blood, tears, sweat सब है कि वो Maliks कौन है? Sardar Malik was a failed musician with great talent. Anu Malik was a fighter and he did it for his father, I'm doing it for mine. That's the only similarity. And the difference is like, like I'm the best of all the worlds. I'm not just an updated version of my father's soul, my grandfather's soul. But मुझ में भी मस्ती जब आती है तो I can do Ashik Surrender हुआ, चार शनिवार, like जुड़वा kind of music which he did. So I've learned from them. But he is the one who made it possible कि कोई legacy बनेगी तो शुरू उनसे हुई. Started music from my grandfather, but someone who made it the Malik thing was Anu Malik. There are so many more songs from Sab Tera, Bol Do Nazara. मुझे याद दिलाओ, मेरे को बताओ. No, good. Now I want to know trivia. मेरे गाने बताओ. I'm going to do a video about this. ये मेरे गाने बताओ, आपको कौन से आपने सुने हैं, अच्छे लगे. मैं तारीफ सुनना चाहता हूँ आज. सुनो. कौन है आप? Who are you? Sorry. क्या चल रहा है यहाँ पे? इसको ये गजनी हो चुकी है. I want to say that I want to keep a lot for another interview. Yes, but always. Before we end this beautiful session, मेरे हिसाब से, if I am asked a song that defines my love for Amaal music is मैं रहूं या ना रहूं. And I don't think there has ever been any interview that has gone by without that track. I want to continue that tradition. I want you to please do the honors by singing this absolutely evergreen song, timeless song, if I may say so. Please say so. I wish it had a way to teleport 20 years back. And if my grandfather was alive for whom we made it, I just wish he could hear it. Somewhere he listens to it also, I think. मुझे तो मैं इधर ये टेरेस है ना जहाँ, वहाँ मैं गाने बनाता हूँ पहले. इधर आके कॉर्ड्स बनते हैं, इधर आके लिरिक्स बनते हैं और अंदर पूरा प्रोडक्शन. शायद ये लाइन उन्हीं के लिए लिखी थी कि हवाओं में लिपटा हुआ मैं बिल्कुल गुजर जाऊंगा तुमको छूकर. When I was 14, he was breathing his last and he said कि मेरे लिए, and he said मेरे लिए एक एल्बम बना देना. Can you make? I have some songs. I said, I don't know how to, and I didn't know how to play, like use laptop, produce, and I was just helpless, and he went. So his last dream was to do an album. That's why I never gave Mehro to film also much. And I pitched it for films. No one liked the song, surprisingly. Sab said dated hai, bahut hai. But Imran Hashmi and Amit Sharma and Bhushan Kumar heard it. And
आई सेड सर दिस इज माय ट्रिब्यूट, तो मैं हर एक एस्पेक्ट में इसमें इन्वॉल्व रहूँगा, कौन डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी पहली बार एक म्यूजिक कंपोजर पूछ रहा है कि सर डायरेक्टर कौन है, यानी इमरान हाशमी अगर आ जाए तो ग्रेट, बट वी कैन नॉट हैव एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द इंटेंशन कि दोनों भाई अपने ग्रैंडफादर की लेगेसी को जहाँ से शुरू हुआ जिसको मिला नहीं उनके लिए है ये गाना, बट हर रिश्ते पे जाएगा जिंदगी, बाप बेटा, मम्मी मम्मी एंड हर किड, some relationship you're in or some which has moved on, friends कि कोई long distance है, हर एक you cannot define मैं रहूँ but it defines me. It's unbelievable and I see it as the last thing to say, not to say it negatively because my fans get scared मैं से मरने वरने की बातें करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं हम यहाँ ऐसे सब कुछ करने नहीं है, I've come here to rule, so till I can rule I'll rule, I've never came to survive. Someone asked me this, did you come to survive in this industry? Like, there's so much competition, Yeah. how do you survive? So I said, I came here to rule, and I rule people's hearts, and I'll rule it till the end. चार्ट्स सब बदलते हैं, आज मैं हूँ कल कोई और है, ये बट लोगों के दिलों में मुझे बसना है, और मैं मेरी ऑडियंस से कहना चाहता हूँ अब इस गाने से, उस टाइम दादा के लिए था कि मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम मुझ में कहीं और मुझे मेरे म्यूजिक को कहीं अपने दिल में बाकी रखना, इफ यू कैन, यू नो, क्या बात है। एंड टुमारो व्हेन दे से कि हाँ मशहूर कंपोजर अमल मलिक निकल ली है, whatever, this song will play and I believe should play because this marks my entirety कि ये मैं हूँ, ये गाना मेरा सोल है, मेरी पहचान यही गाना है, बाकी मैंने हिट गाने किए होंगे बट सच्चा और अमेजिंगली प्योर गाना अगर किया है, थैंक यू टू रश्मि वैराग एंड अरमान ऑल्सो, तो ये है, दिस सॉन्ग encompasses my whole soul. Let's hear it. मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुम से कहना, 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 मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, la 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 la, oh oh oh, किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ, कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना है तुम से कहना, 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 हवाओं में लिपटा हुआ मैं गुजर जाऊंगा तुमको छू के, अगर मन हो तो रोक लेना, ठहर जाऊंगा इन लबों पे, हवाओं में लिपटा हुआ मैं गुजर जाऊंगा तुमको छू के, अगर मन हो तो रोक लेना,
ठहर जाऊंगा इन लबों पे, मैं देखूं या ना देखूं, तुम मुझको महसूस करना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम, I'm crying, से कहना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना, मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। I hope he's listening because I'm doing my best. Okay, cut it now. Amaal! What? I'm not dead. Relax. You hug. You're so sweet. Oh. It's not easy for me to cry, but every time I think about my grandfather, यानी ये मेरा एक रहेगा कि काश देख सकते सब, पता नहीं आप लोग सबने अवार्ड्स वहां से लेके यहाँ डाले हैं, ये सबसे यानी वो अवार्ड और है, यानी आई होप इज लिसनिंग, आई होप माय दादी इज आल्सो चिलिंग विद हिम नाउ, बोथ द कपल आर वन, दोनों देख रहे हैं दोनों बच्चे इस लेगेसी को, dancing to your songs. Possible waltz on मैं रहूं, Yes, both of them must be doing absolutely. and saying कि yeah babies did well. So I hope सरदार मलिक जी जहाँ पे भी है and he listens and somehow because I feel कि मेरे जो tunes है ना वो भी मुझे I think he sends from the clouds. I stand on the terrace, that's why मैं खुले मैदान में खड़े रहता हूँ कि somewhere he'll send a melody, क्योंकि मैं मेहनत से लिरिक्स और प्रोडक्शन पे करता हूँ, धुन मुझे नहीं पता कौन बनाता है, आई थिंक वो ही बनाते वो ही भेजते, और मैं I'm not shit, बन रहा ही नहीं गाना, ऐसे दादा कुछ भेजो यार नहीं बन रहा है, and I have a tune, like it's there, we have a connection and he has spent a lot of time with me. From the age of 1 to the age of 15 I was lucky my dad was not successful till my 10th grade, कि मुझे सरदार मलिक जैसे लेजेंड और माय दादीज एल्डर ब्रदर हसरत जयपुरी साहब हुज रिटन एहसान तेरा होगा एंड बदन पे सितारे, इन लोग की जैमिंग इनके सेशंस देखने मिले, तो मैं 60s का ही बच्चा हूँ, मैं सिर्फ साउंडस्केप 2023 हूँ, तो द 60s द 70s थ्रू अन्नू अंकल, the 80s 90s and the early 2000s, all music I have grown up in from my grandfather to Dabu Malik, so I am the sole bearer of their DNA, you know, and Armaan is the best singer of our family, हम लोग कोई उसके सामने गा नहीं सकते, बट मैं अगर समझता हूँ कि मेरी म्यूजिकलिटी को, मेरे फीलिंग्स फॉर माय ग्रैंडफादर, मेरे डैड, मेरी लेगेसी को अगर कोई बेस्ट दुनिया के सामने उस फीलिंग को रखता हूँ, मेरा भाई है, एंड आई होप everyone, even our parents are seeing it, we're grateful that in their alive years and the years they're living, they're seeing this and they think it's a dream, but even we feel it's a dream, but my grandfather and my grandmother, wherever they are, Nana, Nani also, Nani is still here, but Nana is no more, everyone, our elders were from the family, देखे कि दोनों बच्चे होनहार थे, मेहनत की, नालायक नहीं निकले और ऐसा काम करने आए, नहीं तो नहीं करने आए कि जो रह जाए. On that note, on that very note, beautiful which note, is not playing now, but it will. On, हाँ वापस करते हैं. On that note. That note. Thank you so much, Amaal. Thank you. Thank you for just being so honest with your music. Thank you. क्योंकि शायद honesty आपकी जो है वो definitely दिल तक पहुँचती है, and हम सभी आपके म्यूजिक को पसंद करते हैं, इतना लव देते हैं, and we'll continue doing that. So thank you so much, man. Thank you. Thank you. I've never hugged so much. I've never hugged anyone so much. Our husband will kill me and all now. All right, I hope you guys enjoyed this session. किसने hug किया उसको? He knows you. He knows you. I'm like, मैं अमाल के घर जा रही हूँ. All right, thank you once again, so Amaal. much. And thank you guys for watching us on Bollywood Hungama. My name is Urmin. Thank you. Thank you to the whole team of Bollywood Hungama. Love you guys. Hi guys, this is Amaal Mallik and you are watching me on Bollywood Hungama.